नमस्कार আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুজৰাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰে পৰা গুজৰাটত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেৰে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবঢ়াম গুজৰাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ भाई मेरा आज माँ और पिता का जो विवाह है वो विवाह मेरे लिए कोई मेरे सेलिब्रेशन नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म है कि भाई मेरा पिता और माता जी का फलाना दिन विवाह हुआ था। ये मेरे लिए कितना पवित्र दिन है। लेकिन आज क्या है, क्या हुआ था, देश का मुसलमान बहन लोगों को आप दुबई में हो, दुबई में मोबाइल में लिख दो तलाक 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 कहानी खत्म और आगे कुछ नहीं है। ऐसे क्या देश से चल सकता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का लाखों महिला को तलाक हटा के लाखों महिला को एम्पावर किया, लाखों महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दिया। ये कोई सामान्य काम नहीं था। लोग बोला था अगर आप ये तलाक प्रथा का विरोध करेगा देश जल जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ है, उल्टा हो रहा है। मुसलमान महिला आज प्रधानमंत्री मोदी जी को खुल के दुआ करता है, खोल के आशीर्वाद करता है। अभी भाइयों और बहनों, मेरा तो ये सपना है, आगे क्या होगा पता नहीं। एक पुरुष का 3 शादी करने का कहां से इजाजत होता है? 5 साथ क्यों शादी करेगा? अगर शादी भी करेगा तो आपका बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी देश का यह सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। और मेरा ये उम्मीद है आज उत्तरांचल में, हिमाचल में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में यूसीसी का बात बोला गया है और मैं विश्वास करता हूं भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का लाखों महिला को तलाक हटा के लाखों महिला को एम्पावर किया, लाखों महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दिया। ये कोई सामान्य काम नहीं था। लोग बोला था अगर आप ये तलाक प्रथा का विरोध करेगा देश जल जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ है, उल्टा हो रहा है। मुसलमान महिला आज प्रधानमंत्री मोदी जी को खुल के दुआ करता है, खोल के आशीर्वाद करता है। अभी भाइयों और बहनों, मेरा तो ये सपना है, आगे क्या होगा पता नहीं। एक पुरुष का 3 शादी करने का कहां से इजाजत होता है? 5 साथ क्यों शादी करेगा? अगर शादी भी करेगा तो आपका बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी देश का यह सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। और मेरा ये उम्मीद है आज उत्तरांचल में, हिमाचल में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में यूसीसी का बात बोला गया है और मैं विश्वास करता हूं भारत में ऐसा भी चमत्कार आएगा और कोई देश में यूसीसी का बिना नहीं चलेगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। भाइयों और बहनों, पूरी दिन में आपने सुना दिल्ली में क्या हुआ कि आफ्ताब नाम का एक बदमाश ने एक श्रद्धा नाम का लड़की को दिल्ली लेके गया और उनको 35 पीस किया। एक पीस नहीं है, 35 पीस किया, 35 पीस किया। तो देश में राव जहाज का खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। क्यों ऐसा चलेगा देश में? तो ये सारे जो काम है, ये काम करने के लिए हम लोग को केंद्र में ऐसा एक सरकार चाहिए, देश को एक ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार का पास निर्णय करने का क्षमता रहता है। आज मैं जो असम का प्रदेश में आया हूं,
वो प्रदेश में क्या था, हमारा असम में फ्राइडे बंद होता था, संडे खुला होता था, कम से कम 12 जिले में। सरकार स्कूल चलाए ना चलाए अलग बात था, लेकिन पूरा मद्रासा टीचर का तनख्वाह सरकार दिया करता था। मुझको मैंने मद्रासा बंद कर दिया, टीवी में मुझको पूछा है दिल्ली में, आपने मद्रासा बंद कर दिया, आपका ये क्या इरादा है? मैं बोला मेरा इरादा ठीक ठाक है, हमारा मुस्लिम भाई बहन को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, इसलिए मैं मद्रासा में ताला लगा दिया, बस सिंपल सा बात है। तो देश को आज एक दिशा मिल चुका है। गुजरात का जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के लिए आज देश को एक दिशा मिल चुका है। अब यह G20 का सभा देखिए, विश्व का सभा देखिए, हमारा प्रधानमंत्री कहां बैठता है, हमारा प्रधानमंत्री का साथ कैसे लोग व्यवहार करता है। किसी ने मनमोहन सिंह का साथ ऐसा फोटो दिखा सकता है क्या? किसी ने दिखा सकता है? राहुल बाबा को है एल्बम में ऐसा कोई चीज? आज देश को गौरव महसूस होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री को कैसा सम्मान देता है। नरेंद्र मोदी को नहीं, और देश का 130 करोड़ भारतीयों को सम्मान आते हैं जब मोदी जी को विश्व मंच में ऐसा सम्मान मिलता है। आगे किसी का याद है? यहां में कोई सारे हमारा सीनियर सिटीजन है, आप लोग अपना स्मृति को एक बार 10 साल 20 साल 30 साल आगे ले जाइए, कभी भारत का प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिला था क्या? किसी को सम्मान ऐसा सम्मान नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का स्थान विश्व का जो राजनीति है, समाज नीति है, इकोनॉमी है, इसमें पूरा ऐसा परमानेंट कर दिया जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था विश्व गुरु भारत, आज हमको दिखने लगा कि हाँ वो रास्ता में आज हम लोग चल पड़ा है। भाइयों और बहनों, आज आप सोच सकता है जब कोविड पैंडेमिक हुआ, कोविड पैंडेमिक होने का बाद लोगों में पूरा देश में वैक्सीन का, विदेश में देश में वैक्सीन का चर्चा हुआ। लोगों को ये एक दिमाग में था कि अब भारत में वैक्सीन आएगा। आप देखिए कैसे मोदी जी ने चमत्कार किया, देश का विज्ञानी को उन्होंने प्रेरणा दिया, देश का चिकित्सकों को उन्होंने प्रेरणा दिया, और हमारा देश को अमेरिका, इंग्लैंड जब वैक्सीन निकाला, इसी समय भारत भी इसी समय ने वैक्सीन निकाला। आप देखिए प्रधानमंत्री जी है, कोई भी वैक्सीन वो ले सकता था, लेकिन आप देखिए कौन सा वैक्सीन वो लिया, और को वैक्सीन लिया जो भारत में निर्माण हुआ, जो आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण था। लेकिन वो दूसरा वैक्सीन भी ले सकता है, प्रधानमंत्री के लिए कोई वैक्सीन का कमी था? अमेरिका वाला वैक्सीन ले सकता था, विदेश वाला कोई भी वैक्सीन ले सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने को वैक्सीन लिया। तो कांग्रेस ने क्या क्वेश्चन किया कि ये वैक्सीन नकली है, ये वैक्सीन का कोई दाम नहीं है, ये वैक्सीन का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो भारत मन में सोचा, अगर भारत का विज्ञानी जो बनाया हुआ है वो वैक्सीन अगर नकली है, तो बात कीजिए कांग्रेस भाई बहन, आप लोग भी नकली है, आप लोग भी असली नहीं हो सकता है। बाद में क्या हुआ, वही कांग्रेस का नेतागण वैक्सीन सेंटर का सामने लाइन किया, एक का बाद एक, और मारामारी करके वही वैक्सीन लिया। तब मोदी जी जिंदाबाद। और आज सारे लोग मोदी जी को धन्यवाद देता है कि आपने वैक्सीन का निर्माण किया, बांग्लादेश में वो वैक्सीन चला दिया, भूटान में वो वैक्सीन चला दिया। आज विश्व का कोई सारे देश में वो कोवैक्सीन चला गया, और भारत को वो लोग मानने लगा कि हमारा मुसीबत का समय भारत काम में आया। ऐसा ही देश को आज विश्व गुरु बनाने का रास्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, भारत का जो स्थिति है, भारत का जो लेफ्ट लोगों का जो प्रेजेंस है दिल्ली में, लिटिल दिल्ली का जो बात हम लोग बोलते रहता हूं,
उसका बीच में राम मंदिर बनाना आसान काम नहीं था। 370 धारा खत्म करना आसान काम नहीं था, लेकिन आज सारे काम, तलाक को हटाना एकदम ही असंभव काम जैसा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक करके सारे असंभव काम को संभव कर दिखाया। तो इसलिए मैं वही गुजरात का धरती में आया हूं, जो धरती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को उपहार दिया, जिसको आप लोग पहले पहचाना और आप लोगों ने उनको ताकत दिया, और आप लोगों का ताकत के लिए आज देश को ताकत मिल रहा है। मेरे भारत माँ को, आपका भारत माँ को ताकत मिल रहा है। भाइयों और बहनों, ये गुजरात चुनाव में हम लोग को बहुत बड़ा संदेश देना है। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड से गुजरात से बीजेपी को जिताना है और बहुत बड़ा सुंदर रिजल्ट देना है। इसलिए हमारा आंख अभी खाली भारत नहीं है, अमेरिका को भी पीछे करना है, चाइना को भी पीछे करना है। 2 दिन आगे अगर मैं ये बात बोलता था, लोग मुझको हंसता था, लेकिन अभी ये 2-3 महीना पहले ही हम लोग ब्रिटेन को पीछे भगा दिया कि भाई अभी आप हमारा पीछे में बैठो। तो अभी लोगों का विश्वास आते होता है कि नहीं, भारत का भाग्य में भी दोबारा विश्व गुरु बनना लिखा है और हम लोग विश्व गुरु बन के ही रहेगा। और ये हमारा एक कलेक्टिव कमिटमेंट है, कलेक्टिव रिजोल्यूशन है कि हम लोग वो मुकाम तक पहुंचेगा और हम लोग सब लोग मिलके मोदी जी को ताकत देगा। मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग वहां तक पहुंचेगा। अंजार में हमेशा ही बीजेपी जीतता है और आप लोग का बीच में जितना मैंने उत्साह उमंग देखा, यहाँ में तो बीजेपी जीतना कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम से बीजेपी जीतेगा। और क्यों नहीं जीतेगा? कच्छ का भूकंप का बाद जब नया निर्माण हुआ, नवनिर्माण हुआ, एक अभी हमारा मंत्री जी बोल रहा था कि एक जिला में 90 बार का मुख्यमंत्री आना कोई ये सोच भी नहीं सकता है। मैं भी एक स्टेट का मुख्यमंत्री हूं। मेरा स्टेट तो गुजरात का कंपैरिजन में क्षेत्रफल बहुत छोटी है, लेकिन आज 1.5 साल में সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। দেশ জোকাৰি যোৱা শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ ন তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। পুনৰ বিস্ফোৰক তথ্য কিছু সন্মুখলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত। দিল্লী আৰক্ষীৰ আগত আফতাবৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। হত্যাকাণ্ডৰ নিশা আফতাবে সেৱন কৰিছিল ভাং। 18 মেৰ নিশা আফতাবে সেৱন কৰিছিল ভাং। ভাঙৰ নিচাত ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল শ্ৰদ্ধাক। ভাং আসক্ত আছিল আফতাব আমিন পুনাৱালা। হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ কাষত 1 পৰা 2 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বহি আছিল আফতাব। আফতাবৰ ইণ্টাৰনেট হিষ্ট্ৰী পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে ডেটিং এপত আফতাবৰে হোৱা কথা বাৰ্তাৰ ওপৰতো চলিব তদন্ত। আফতাব শ্ৰদ্ধাৰ মাজত হোৱা কথা বাৰ্তাৰ ওপৰত তদন্ত চলোৱা হ'ব। মুঠৰ ওপৰত সকলো প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে। ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। নাৰ্কো টেষ্ট কৰা হ'ব। নাৰ্কো টেষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। শেহতীয়াকৈ যি জেৰা চলোৱা হৈছে, এই জেৰাৰ সময়ত আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আফতাবে। এজন ভণ্ড প্ৰেমিকা আফতাবে হত্যাকাণ্ডৰ নিশা সেৱন কৰিছিল ভাং।
18 মে সেই অভিশপ্ত দিনটোত আফতাবে ভাং সেৱন কৰিছিল ভাঙৰ নিচাত ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল শ্ৰদ্ধাক ভাং আসক্ত আছিল আফতাব আমিন পুনাৱালা হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ কাষত 1-2 ঘণ্টা বহি সময় পাৰ কৰিছিল আফতাবৰ ইণ্টাৰনেট হিষ্ট্ৰী পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সমান্তৰালকৈ ডেটিং এপত আফতাবৰে হোৱা কথাবাৰ্তাৰ ওপৰত চলিব তদন্ত আফতাব আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ চ্যাটিং হৈছিল এই চ্যাট হিষ্ট্ৰীও ইতিমধ্যে বাহিৰ কৰাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰক্ৰিয়া আৰু শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাই আছো কিমান নৃশংস কিমান বৰ্বৰ হ'ব পাৰে মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ এই নৃশংসতাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ আৰু তেনে সময়তে আমি জনাই আহিছো এই বিস্ফোৰক তথ্যসমূহ আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে হত্যাকাণ্ডৰ ন তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে 35 টুকুৰা নহয় 16 টুকুৰাহে কৰা হৈছিল শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহ হাত আৰু ভৰি 3 টুকুৰা কৰিছিল পাখানটোৱে কঁকালৰ তলৰ অংশ 2 টুকুৰা কৰিছিল লাউখোলা 2 টুকুৰা কৰা হোৱা নাছিল মে নহয় অক্টোবৰত শ্ৰদ্ধাৰ দেহৰ অংশ পেলাইছিল আফতাবে দেৰাদুনত শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ অংগ পেলাইছিল আফতাবে দিল্লী আৰক্ষীৰ আগত নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আফতাবে এই কথা প্ৰথম অৱস্থাত 35 টুকুৰা কৰা হৈছিল বুলি কৈছিল মুঠৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ ওচৰতো কিছু নাটক কৰি আহিছে এইজন আফতাবে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে বা আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে প্ৰথম অৱস্থাত 35 টুকুৰা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল হেউটিয়াভাৱে পুনৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে 35 টুকুৰা নহয় 16 টুকুৰাহে কৰা হৈছিল শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহ মে মাহত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 18 মে নিশা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিছিল কিন্তু মে মাহত নহয় অক্টোবৰ মাহতহে শ্ৰদ্ধাৰ দেহৰ অংশ পেলাই দিয়া হৈছিল দেৰাদুনত শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ অংগ পেলাই দিছিল আফতাবে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী অভিযান চলাই প্ৰায় 10 পৰা 13 টুকুৰা হাড় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিহ্নমুণ্ড এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই শ্ৰদ্ধাৰ মোবাইল এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই কাৰণ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে OLXত বিক্ৰী কৰি দিছিল শ্ৰদ্ধাৰ মোবাইল আৰক্ষীৰ জেৰাত শেহতীয়াকৈ এই সমূহ বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে পাখান আফতাবে আৰু এই আফতাবৰ অত্যাচাৰত হতাশাটো ভুগিছিল শ্ৰদ্ধা হতাশাত ভুগি চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছিল শ্ৰদ্ধাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শ্ৰদ্ধা চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছিল 3 ডিচেম্বৰত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শ্ৰদ্ধা পিঠিৰ বিষৰ বাবে চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিল নিউজ 18ৰ হাতত শ্ৰদ্ধাৰ মুখত প্ৰহাৰ কৰাৰ ফটো এই মুহূৰ্তত আহিছে আমি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপোনাক দেখুৱাইছো কেনেদৰে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল শ্ৰদ্ধাৰ ওপৰত আফতাবে চৰম অত্যাচাৰ চলাইছিল এই অত্যাচাৰ সহি মানসিক হতাশাত ভুগিছিল যাৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছিল আৰু শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ জোকাৰি যোৱাৰ সময়তে এই সমূহ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আৰু নিউজ 18ৰ হাতত আহিছে এইখন আলোকচিত্ৰ য'ত শৰীৰত মুখত সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন আফতাবে এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল যে হতাশাত ভুগি শ্ৰদ্ধাই চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছিল নাক আৰু মুখত প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত এই ফটোখনত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি আপোনাক জনাই যাম আহিছো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খবৰলৈ লাচিত দিৱসত মূলা গাভৰুৰ মাৰ্চ পাষ্ট নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন কৰে এই মাৰ্চ পাষ্ট এই মাৰ্চ পাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াসকলে ক'লে আমি মূলা গাভৰুৰ দৰে হ'ব বিচাৰো আগবঢ়াম নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো লাচিত দিৱসৰ যি 400তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ যে মাৰ্চ পাষ্ট আয়োজন কৰা হৈছে আৰু মোৰ লগত দেখুৱাইছোঁ মই অসম আৰক্ষীৰ নতুনকৈ যোগদান কৰা বহু মহিলা উপ পৰিদৰ্শক আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি নতুনকৈ যোগদান কৰিছে হয় কিমান দিন হ'ল আজি আমাৰ চাকৰি পোৱাৰ পৰা 1 বছৰ কিন্তু কৰ্মৰত অৱস্থাত আমি এনেকৈ থানাত আমাৰ 6 মাহ হৈছে হয় আৰু যি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন যি মোগলক প্ৰতিহত কৰিছিলে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত যেতিয়া মোগলে দপদপাই আছিলে তেতিয়া অসমত কিন্তু লাচিত বৰফুকনে বীৰত্বৰে মোগলক প্ৰতিহত কৰিছিলে
আৰু সেই লাচিত বৰফুকনৰ চৰ্চা বহুত কম কিন্তু অসম চৰকাৰে বৰ্তমান এইবাৰ দিল্লীতো সেই বাৰ্তা লৈ গৈছে অতি সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰা হৈছে কি ক'ব আপুনি এই আমাৰ সবাইকৈ আমাৰ গৌৰৱ আৰু আমাৰ কৰ্তব্য আছিল আৰু আজি আমি আজি সগৌৰৱে আজি এনেধৰণে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁ আমাৰ আদৰ্শ যিহেতু আমিও দেশৰ ৰক্ষাকৰক হিচাপে আমি যোগদান কৰিছোঁ আমাৰ চাকৰি জীৱনত গতিকে তেওঁ আমাৰ আদৰ্শৰ আৰু সেই সগৌৰৱে আজি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা কৰিব পাৰি মই নিশ্চয় সুখী হৈছোঁ ক'ৰ পৰা আপুনি কোন ঠাইৰ আপুনি মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু বৰ্তমান মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিং আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আৰু লাচিত বৰফুকনৰ লগতে কিন্তু মূলা গাভৰুৰ চৰ্চাও আছে আৰু নিজকে মূলা গাভৰুৰ জীৱনে আপোনালোকক উদ্বুদ্ধ কৰে নহয় জানো নিশ্চয় সেয়ে আমি আজি এনেধৰণে ওলাই আহিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকক আদৰ্শ লৈ আজি আমি নাৰী শক্তি হিচাপে ওলাই আহিছোঁ আৰু দেশৰ হকে সদায় কাম কৰি যাম দেখুৱাইছোঁ মই এইসকল অসম আৰক্ষীৰ মহিলা আৰক্ষীৰ নতুনকৈ যোগদান কৰিছে আৰু মূলা গাভৰুৰ আদৰ্শই তেওঁলোক উদ্বুদ্ধ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে যি মাৰ্চ পাষ্টৰ যি আয়োজন কৰিছে তাত অসম আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ নতুনকৈ যোগদান কৰা যিসকল উপ পৰিদৰ্শক আছে মই দেখুৱাইছোঁ উপ পৰিদৰ্শক মহিলা উপ পৰিদৰ্শক আছে এইসকল যুৱ পৰিদৰ্শক তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে আৰু লাচিতৰ আদৰ্শই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে আৰু যিগৰাকী মহাবীৰে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত যেতিয়া মোগলে দবদব পাইছিলে সমগ্ৰ ভাৰতত যেতিয়া দবদব পাইছিলে সেই সময়ত কিন্তু অতি সাহসেৰে মোগলক প্ৰতিহত কৰিছিলে আৰু সেই বীৰ লাচিতৰ সোঁৱৰণত বৰ্তমান দেশলৈ পোৱা গৈছে 400তম জন্ম জয়ন্তীত এইদৰে মাৰ্চ পাষ্ট আয়োজন কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আজিৰে পৰা 8 দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে লাচিত দিৱস বীৰ লাচিতৰ 400 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজি প্ৰতিখন জিলা সদৰত এই বিশাল মাৰ্চ পাষ্টৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এয়া গোৱালপাৰাৰ পৰিৱেশ গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশাল মাৰ্চ পাষ্ট কাৰ্যসূচী নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত মাৰ্চ পাষ্ট কৰে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বীৰ লাচিতৰ 400 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাটো উলিওৱা হৈছে জিলা আৰক্ষী CRPF গোৱালপাৰা NCC ডাকুৰভিটা বেটেলিয়ন সৈনিক স্কুল গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিশাল মাৰ্চ পাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী আমি উদযাপনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমাৰ জিলা আৰক্ষী বিভাগে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আমাৰ জিলাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ CRPF সৈনিক স্কুল NCC NSS আদি কেডেটসকলে ইয়াতে এটা মাৰ্চ পাষ্ট উলিয়ালে বীৰ লাচিত ফুকনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিবলৈ আৰু আজিৰ পৰা আমি 25 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰিম আজিৰ পৰা এটা ষ্টাৰ্টিং এজ আজি হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ডে এইটো হ'ব 20 তাৰিখত সেইদিনত ব্লাড ডোনেশ্যন হ'ব আমাৰ ক্লিনলিনেছ হ'ব প্লান্টেশ্যন হ'ব বিভিন্ন মানে আমি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কাম যি আছে এইটো কৰিম আমি আৰু তাৰপিছত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যি কাৰ্যকলাপ কৰিব সেইটো চব ইভেণ্টছত আমাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন হ'ব আৰু লগতে নতুনকৈ কিবা ইনোভেশ্যন কৰাৰ কথা আছে তো আমি এই মাজতে কৰিম খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল মিড ডে 18ত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি